Good afternoon, everyone. Welcome to the Wednesday afternoon session with our expert, Mr. Arpit Beriwal. Arpit sir, good afternoon. I hope you can hear me and see me. Yes, Anuj, I can hear you. Your screen is visible. Great. So you can share your screen and then we can start. Meanwhile, good Just, afternoon, yeah, everyone. just take a minute. Just a Sure, second. sure. My name is Anuj Sharma. I am the community manager here at Motilal Oswal. You see me daily hosting these sessions. आज के afternoon session में जैसा मैंने बताया, we have Arpit Beriwal sir with us, the Bank Nifty expert. We'll start with a quick index overview. We have a Nifty expiry tomorrow, so we'll give you a detailed overview of the same. Then we'll move towards the important market events that will impact stock market, and then we'll move towards the trade. If we have any option trade or the strategy trade, we'll definitely share that, or else we'll move towards the BTST and take some queries towards the end of the session. So Arvind sir, over to you. We are good to go. Okay. Just want to check the screen is visible. Yes, sir. We can see the Nifty 50 index. Perfect. So very good afternoon, guys. So today, if we talk about overall the market setup-wise, the flow is already mentioned by Anuj. So starting with the headline indices, Nifty and Bank Nifty. First, we'll talk about Nifty. So this week, if we have seen a very large swing. And if we talk about just a couple of days back, we take it on Monday. We have seen one of the biggest intraday gains in Nifty after almost 4 years, post easing out of the geopolitical tension. So if we see Nifty, last week the closing was around 24,000, and on the Monday itself we have seen a rally of almost 900 points towards 24,900 950 levels. कल और आज में अगर हम देखें उसके बाद थोड़ा सा हमने कूल ऑफ देखा from higher levels. So overall Nifty, where it was struggling earlier around 24,500 levels, now that is the immediate support for Nifty. On the upper band, 24,750, 24,900 is the resistance level. So today also we have seen quite choppiness. In fact, quite a volatility between this range. So Nifty open on a positive note, sharp move towards 24,700 levels around. Post that some cool off was seen, and now it has been consolidating around 24,600 levels. So from a technical perspective, from the weekly time perspective, the time frame it's positive. On the daily chart, it is hovering near its major support zone. 24,444, 24,550 was the earlier hurdle zone, जो हम काफी टाइम से बात कर रहे थे, और अब वो इमीडिएटली निफ्टी के लिए सपोर्ट बन जाएगा. सो लेवल वाइज के बारे में बात करें हम, 24,445 is a major support level. Immediate basis 24,500 is the immediate support zone. Whereas on the upside, 24,750, 24,850 is the hurdle zone. So look at the chart setup wise. Tomorrow we have weekly expiry because of selective metals, IT stocks are holding. जिसकी वजह से निफ्टी में थोड़ा सा मोमेंटम है. And if we see chart setup wise, immediate basis पे अगर हम OI data भी देखें तो 24,400 पे मैक्सिमम पुट राइटिंग है. अपर बैंड में 24,800 पे कॉल राइटिंग इंटैक्ट है. सो लेवल वाइज में हमारा ओवरऑल बायस पॉजिटिव है जब तक निफ्टी 24,444 के ऊपर रहता है. अपर बैंड में 24,800, 24,850 इज द सप्लाई जोन. सो आपको ये रेंज प्ले आउट करनी पड़ेगी. हालांकि थोड़ी देर में हमने ऊपर से थोड़ा कूल ऑफ देखा है, बट स्टिल द बायस वुड बी मिक्स विद पॉजिटिव बायस as multiple supports are seen near on the downside, whereas on the upside 24,800 would be the major hurdle level. Now talking about Bank Nifty, so Bank Nifty was also one I've seen as one of the spectacular move on Monday. Post that थोड़ा ऊपर से हमने cool off देखा है. So Bank Nifty का अगर हम इस month का overall chart देखें for last 14-15 sessions, broadly it is trading in a channel, और आप उसको फ्लैग भी बोल सकते हैं. ब्रॉडली एक चैनल में ट्रेड कर रहा है जहाँ पे 55,500 के वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, नीचे में 53,750, 54,000 के आ रहा है, वहाँ पे सपोर्ट जोन है. सो ओवरऑल बायस बैंक निफ्टी का रिलेटिवली थोड़ा सा हमने आज अंडर परफॉर्म देखा है बिकॉज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, कोटक थोड़े से डल है. सो बैंक निफ्टी का भी ओवरऑल व्यू जो है एक रेंज में है. नीचे में 54,000 का सपोर्ट है, ऊपर में 55,000, 55,250 का मेजर हर्डल्स है. सो बैंक निफ्टी व्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द कमिंग डेज टू अ वीक्स टाइम इज ओवरऑल मिक्स्ड with downside protected near 54,000 levels, upside में 55,250, 55,555 is a major hurdle zone. And हमारा व्यू कि तब तक ही इसी रेंज में बैंक निफ्टी रेंज मूव जो है वो प्ले आउट कर सकता है. So overall, talking about Nifty, Bank Nifty, now coming on to the main key thing that is really works well for the option writers and for option buyers, India VIX. So today, if you've seen, in spite you've seen some momentum in Nifty and Bank Nifty in the first half, आज जो प्रीमियम्स हुए काफी कूल ऑफ हुए because one of the major reason is that India VIX has coolen off
from almost 21 22 levels to almost 17 levels. आज भी हमने 4 to 5% का थोड़ा सा कूल ऑफ देखा है, जिसके वजह से प्रीमियम्स जो है काफी श्रिंक हुए. आज काफी प्रीमियम डीके टाइम डीके फैक्टर काफी बड़ा प्ले आउट हुआ है. सो डेफिनेटली जो भी क्रेडिट स्प्रेड्स रहे थे एक्सपायरी के लिए उसमें काफी अच्छा बेनिफिट हुआ है, जिसने भी फ्रॉम अ क्रेडिट एंगल के हिसाब से सोचा है. सो अ कूलिंग ऑफ फ्रॉम हाई लेवल्स डेफिनेटली इज अ गुड साइन फॉर द बुल्स, जिसके वजह से निफ्टी अगर आप देखें तो अपर बैंड पे कंसोलिडेट कर रहा है. And going forward also, it's like if it cools below 14.5 50, that would give more stability, but still at least from high levels India VIX has coolen off, so that gives definitely a good sign. Now talking about where the real momentum is happening is in the broader market, that is mid cap and small cap indices. And today we have seen one of the spectacular moves in the defense sectors followed by metal counters. However, few ideas that are still looking promising. First would be from the मेटल सेक्टर, एज इट इज मेटल सेक्टर्स में भी काफी अच्छा मोमेंटम है. एंड अलोंग विद दैट इट्स अ एक्सचेंज प्ले, दैट इज एमसीएक्स. सो एमसीएक्स अगर हम चार्ट सेट वाइज देखें सो पिछले 8 से 10 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, बट ओवरऑल स्टॉक का जो बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है. सो वन ऑफ अ सीरिया कॉल्स दैट लुक्स गुड फ्रॉम ईयर ऑन आल्सो फ्रॉम 5 to 7% मूव इज एमसीएक्स. 6170 अभी चल रहा है. 6160 से 6170 के रेंज में बाय कर सकते हैं. 6000 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 6350 6400 के लिए एमसीएक्स इज वन ऑफ अ सीरिया कॉल दैट यू कैन गो फॉर, बिकॉज मेटल एंड एक्सचेंज स्टॉक्स में दोनों में काफी अच्छा मोमेंटम है, दैट यू कैन प्ले इट आउट. Another is from the kind of a stable, slow and steadily counter, that is from the jewelry space, consumer space, Titan. So Titan का अगर हम वीकली एंड मंथली सेटअप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है. Before that, I just want to check, Anuj, CDI levels are clear for MCX? Yes, sir. We have already shared and pinned it as well. Oh. So second is the Titan. So overall monthly weekly setup देखो तो monthly पे falling supply टनल का breakout दिया है. Daily scale पे भी higher lows बना रहा है. Strong bullish candle के बाद it's sustaining at high levels. So slowly steadily we can see a good move towards 3700 3720 plus Titan maybe. So Titan would be a second CI call that looks very strong. Slow and steady move can be seen towards 3720 levels. So Titan पर मेरी बाई के चला रहेगी 3585 3590 पे चल रहा है. 3520 के एसएल से आप 3720 के लिए you can hold it and you can buy another CDI call for couple of days to weeks time perspective. So as of now, 2 calls we have given, that is one is MCX, second is Titan. Apart from the defense sector में काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा, and in fact काफी टाइम से हम बुलिश भी थे डिफेंस सेक्टर में. जो एक रिकवरी हमने देखी थी पिछले 1 से 2 महीने में, काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी थी. सो आज अगर देखें तो थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा मोमेंटम में थोड़ा सा कूल ऑफ देखा है. सो इस जंक्शन पे हम लोग डिफेंस स्टॉक जो है एग्रेसिवली विल नॉट रिकमेंड, बट जैसे थोड़ा सा डिप अगर आता है मस्डॉक, एचएएल, बीडीएल में डेफिनेटली कैन री एंटर. बट राइट नाउ जो आपने पोजीशंस पहले बनाई हुई है, this is a good time to book profits, because it's very important to regularly book profits in such market where there is always volatility and there is definitely some news that keeps playing out. So defense sector में अगर पहले positions आपकी है, so this is a good time to book profits and wait for some dip for re-entering the positions in that sector. Now talking about overall mid cap and small cap, काफी अच्छा momentum है. So अगर आप देखें market breadth, एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के फेवर में. हालांकि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़े से सबड्यू है, बैंक निफ्टी रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम है. सो ट्राई टू मेक द मोस्ट फ्रॉम दी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, जो काफी अच्छा मूव्स है. Now talking about the BTST, definitely we'll update on the BTST trade because definitely अच्छा momentum है. So we'll try to find out where the alpha can be created. Now coming back to Nifty and Bank Nifty. So if I see overall Nifty Bank Nifty का अगर चार्ट सेट वाइज देखें, so कल एक्सपायरी के हिसाब से जो रेंज वाइज है, let me check out the VWAP levels also. Yeah, so VWAP is around 24,750. So definitely 24,700 750 would be a major supply zone for Nifty for tomorrow's expiry, but at the same time 24,500 is a major support zone. So strategy wise, as of now the bias is positive, but as of now looking at the chart setup wise and the option buying setup wise, there is no major momentum. So as of now we are looking out कि क्या strategy आप play out कर सकते हैं कल के लिए. Immediately buying में there is definitely no momentum. I can pull out the intraday chart also for Nifty Bank Nifty. I'll just check out. So if we see 50 minutes में एक side dull move में है, जिसमें कोई major swings नहीं है Nifty में, और likewise in Bank Nifty. In fact, Bank Nifty is relatively underperforming and is down by almost 250 300 points. So buying setup as of now there is no major momentum,
But yeah, as soon as if we update on any strategy कि हमें strategy जो play करनी है कल के लिए, if we get any conviction and the setup wise and favorable risk reward, we will update on that. And as we are talking, so one of our BTST call that we have already flashed in terminal and we have added also is from the metal pack itself. So that is sale. So अगर हम देखें overall metal index में अच्छा momentum है. Definitely global factors plays a big role, but definitely looking at the chart specific wise also sale का अगर हम chart देखें, एक kind of a bottom formation हुआ है daily और weekly scale पे. बड़ा trend negative है, but overall setup wise देखें तो definitely you can see some pullback move. So sale right now is around 121, 122. So आप BTST buy कर सकते हैं 118.50 का stop loss रख के ऊपर 126 के टारगेट के लिए. Sale would be a first BTST call. Yeah, coming back to Nifty, Bank Nifty. So definitely we've seen some recovery I've seen from the lower levels, but still it is trading in a range. Going forward, what you can take, Anuj, we can take couple of stock queries. I think there is some. So we shared the BTST as well. I'll just scroll up to the top of the queries. Your view on DLF for STBT. Which stock? DLF. DLF. Yeah. So relatively, reality stocks a little bit underperforming, but I'll still look at the charts and what is happening. We'll just have a look. So setup wise, definitely it is finding some hurdle at high levels. And अगर मैं levels के बात करूँ तो 700 का एक major hurdle zone है. अगर आपको एसटीबीटी करना है तो आप डीएलएफ में कर सकते हैं, बट आपको 700 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा. फ्यूचर्स लेवल में आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा. ओवरऑल जब तक 700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, बाय शुड बी नेगेटिव, सो यू कैन गो विद दैट ट्रेड फॉर एसटीबीटी ट्रेड फॉर डीएलएफ. So can we do stock option call on Coforge? Yeah, so that's a very good thing. Actually, mid-cap ITs are doing really well. And if we talk about chart setup wise, Coforge, Persistent, Info Edge, Naukri, all are looking very nice. So definitely Coforge chart setup wise also it's looking very strong. Immediate basis 8200, 8350 is a major support level. 8350 is a major support level. Definitely can play the swing because chart setup wise is very good, and we can see a good move towards 8550, 8600 levels. So definitely it's a recommend for stock option within the mid-cap IT space. You can go for it. The Tata Motors quantity 50 at 711. 711. Okay. So if we see overall, Tata Motors has formed a base formation on the monthly and the weekly scale, but post the outcome of its result numbers, some cool off has been seen from the higher levels. So चार्ट सेटअप वाइज एक ब्रॉडर रेंज में है, 680 से लेकर 720 की रेंज है टाटा मोटर्स की. इमीडिएट बेसिस पे अगर देखें तो उसने प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट किया अराउंड 683 के अराउंड. सो अगर आपका बाइंग प्राइस 711 है, सो यू कैन आप ये लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं, बट ओवरऑल बायस वुड बी स्लाइटली पॉजिटिव विद अ रेंज बाउंड बायस टू अपसाइड पॉजिटिव. 675 वुड बी अ मेजर सपोर्ट. ऊपर में धीरे धीरे 720 750 तक का हमें व्यू दिख सकता है आने वाले एक महीने के हिसाब से. Sir, UPL 29 May 660 call. Buying price 11. UPL 29 May 660 call. Okay, so chemical fertilizer stocks were doing really well till the last week, but post the outcome of its quarter numbers, we have seen some muted reaction of UPL, and in fact the stock has corrected 4 to 5% post its quarter numbers. So chart setup wise, it is back to its major support zone around 625 630 levels. Having said that, अगर आपने option buy किया हुआ है, so definitely the premium will get hurt because time decay factor and the delta factor will also play it out. अभी मिड मंथ ऑलरेडी हो गया है. वी वुड एडवाइज बेटर टू एग्जिट दैट कॉल, एंड जैसे यूपीएल में वापस थोड़ा सा रिवर्सल आता है, अब वापस उसको रीइनिशिएट कर सकते हैं. चार्ट सेटअप वाइज एज ऑफ नाउ इट्स लुकिंग वीक, सो बेटर टू एग्जिट द कॉल. एंड स्पॉट लेवल्स में 630 एक इंपॉर्टेंट लेवल है. 630 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, वी कैन एक्सपेक्ट फर्दर मोर वीकनेस टुवर्ड्स 615 600 लेवल्स. So Cochin Shipyard. Yeah, so defense and shipping stocks has been in quite a free flow today, and we have seen that impact also. But as rightly mentioned,
Today we have seen very sharp moves, so definitely profit booking we have seen from the high levels. Chart setup wise, I'll pull out the weekly chart. Weekly पे kind of काफी अच्छा base formation हुआ है और range breakout दिया around 1650 1660 के around. So positionally the setup is positive. Immediate basis some cool off is seen. So I think 1650 1660 would be a good level to re-entry. वहां पे आप एंटर कर सकते हैं. धीरे धीरे हमें 1800 1900 तक का मूव दिख सकता है आने वाले 1 से 2 महीने के व्यू के हिसाब से. So Sensex call 81,200 at 675. Sensex, which is the strike? 81,200. Call. So if we see about Sensex right now, obviously there are 3 days to expiry. And looking at the chart setup of 81,200 कॉल अगर आपने बाय किया है, so आप स्पॉट लेवल्स में सेंसेक्स की क्लोजिंग देखिए 81,000 की, बिकॉज अभी भी जस्ट इट्स द स्टार्ट ऑफ अ वीक फॉर सेंसेक्स एक्सपायरी. सो 8100 81,000 स्पॉट लेवल्स के आप हिसाब से देखिए, जब तक ये उसके ऊपर है तब तक आप उसको कॉल को होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अनदर 3 days टू सेंसेक्स एक्सपायरी. तो आप उसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं. 81,000 ऑफ स्पॉट लेवल्स में देखें, जब तक 81,000 के ऊपर है तब तक बायस विल बी पॉजिटिव फॉर अपसाइड. Godrej Properties. Another counter from the reality pack, and overall reality pack has been kind of dull. And if we see पूरे मार्केट की रिकवरी के बाद रियलिटी स्पेस में कोई मेजर मोमेंटम नहीं है. थोड़ा सा पुल बैक हमने देखा था, बट उसके बाद वापस सरेंडर हो गया. So chart setup wise, Godrej Property also is range bound to negative bias. Multiple support around 2180 2200 levels, and जब तक ये स्टॉक इसके नीचे है, bias will be negative towards 2080 2050. So overall slightly bias would be negative for overall reality pack as a whole. Coming back to Nifty, Bank Nifty, I'll just revisit if we can get any good setup-wise trade for option buying side or for strategy. So Bank Nifty is in dull between 54,500 to 54,750. Let me check for Nifty. Yeah, so Nifty some relief from lower levels, but overall still it's hovering near around 600 levels. So from a strategy perspective, as we're expecting a range bound move, so overall Nifty is likely to be in that range. Option buying, but there is no major momentum so far. So even if I check the 15-minute chart, it is trading in a range between 24,550 to 24,650 levels. So as of now, there is no promising trade setup. Having said that, very good setups you are getting in mid cap and smaller, broader market setups. So definitely you can take the advantage of that and play that swing. So sometime back, someone asked about Coforge. That was the IT counter. Within that same space, if we check, look at the chart structure of persistent is also very strong. So monthly पे लोअर इसको नेगेट किया है, पिन बार पैटर्न बनाया है, 5,550 के ऊपर नेगेशन हुआ है. Slowly steadily the stock can head towards 6,000 plus level. So persistent is another CDI call that we can go for with a view of 10 to 15 days. 5740 भी चल रहा है, 5720 से 5730 के रेंज में बाय कर सकते हैं. 55 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 6000 के टारगेट के लिए persistent is one of our another CDI call that we can go for. Adding to that, it's very important, guys, to understand that as sector-specific rotation is happening, it's very important to play that sector movement. And if you see today, the first hour was clearly for the defense, followed by the selective metal counters, followed by the selective railway counters. So obviously, sector rotation is very quick, and you have to play with that sector. In that also, you have to pick the outperformer that will definitely help you to generate additional alpha. एंड हमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बड़ा सेक्टर का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, वो भी हमें समझना काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एज देगा और कंपैरेटिवली बेटर स्टॉक पिकिंग में हेल्प करेगा. तो जैसे लास्ट मंथ तक का था फाइनेंशियल एंड बैंकिंग बैक, अब वो ये मंथ थोड़ा सा सबड्यू हो गया. नाउ बैक इन एक्शन इज निफ्टी आईटी स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, metal counters, selective auto counters. So sector rotation will keep happening. So you have to play with the sector and play the momentum accordingly. Coming back to the Nifty and Bank Nifty, we are seeing no major movement as of now. And talking about the levels, we have already shared the levels. CDI calls हमने 3 अब तक दिया, अब तक Titan, MCX and persistent. Apart from the one BTST is from the metal pack, that is sale we have given.
Anuj, we can take few more stock queries also in the meantime, because as of now there is no major option strategy perspective or any promising setup. So we can take few stock queries and we can talk about these stocks, and if we get any strategy for tomorrow, we can update on that. Sure. IRFC bought at 166. 166. So railway stocks, after a long time, we have seen some pullback. But if you see the charts of IRFC, still on the monthly and the weekly scale, it is not that great. अगर आप डेली का भी चार्ट देखें तो पिछली बार 133 से बार बार इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है. सो ये काइंड ऑफ बेस बन गया है, बट रियल मोमेंटम हैजंट पिक अप वेल. सो आपको ये रेंज प्ले करनी पड़ेगी. आपका जैसे स्टॉक ऑलरेडी 166 के भाव का है, सो आप यहाँ पे 50% थोड़ा और ऐड कर सकते हैं, तो आपको हेल्प रहेगा कॉस्ट एवरेजिंग करने में. एंड जैसे 135 140 तक का मूव आता है, वहाँ पे यू कैन बुक प्रॉफिट्स, बिकॉज the bigger trend is still negative, but at least आप अगर lower band पे buy करते हैं, so definitely will help you reduce your overall average cost, and slowly steadily you can at least reduce your losses, because railway as a sector, it has bottom, but as of now there is still not major momentum that we have seen, so we have to better wait and go with the more better sectors going forward. Ajanta Pharma 20 shares at 2770. Pharma, if we talk about the nature of the index, is quite actually tricky. If we see the charts at about Ajanta Pharma, right? Yeah. Yeah, I think there are two. What is the buying price? 2770. 2770. Yeah. So if we see the charts otherwise, Ajanta Pharma, let me pull out the weekly chart. The bigger trend of the stock is still positive, but a weekly scale में अगर हम देखें तो overall एक side formation है between 2450 to almost 2750 levels. जो आपने प्राइस है 2770 वो ब्रेकआउट एरिया था, वहां से हमने वापस स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ होते हुए देखा है. So I think you can buy another tranche of Ajanta Pharma at current levels, because that will help you to reduce your cost. And 2500 एक मेजर सपोर्ट जोन है जहाँ से स्टॉक 3 से 4 बार वहां से घुमा है. सो आप ये लेवल पर उसको ऐड कर सकते हैं. 25 का स्टॉप 2500 का स्टॉप लॉस रख के ऊपर 2700 एंड देन फिर 2800 के लिए यू कैन बाय एट करंट लेवल्स. Voltas 1260 call at 36. 1260. 1260. Okay. If I look at the weekly chart, it is sideways to mild positive. It has multiple supports at lower level. On the daily chart, it is sideways. So if we see the charts otherwise, it is sideways, not that promising. And generally in call options, we need momentum. Unless there is no momentum, there is no major advantage to play the option setup on the call side or on the put side. So I think level wise 120 or 1220 support है, ऊपर में 1270 1265 hurdle है. जब तक इस रेंज में रहता है तब तक एक रेंज बाउंड काउंटर रहेगा. Our advice would be better to exit the call because it's already mid month. Also एक चीज ध्यान रखिए, रिजल्ट अगर रिजल्ट इसका स्टिल ड्यू है, प्लीज चेक दैट आल्सो बिकॉज़ द क्वार्टर रिजल्ट सीजन गोइंग ऑन. ओवरऑल बायस वुड बी स्लाइटली कंसोलिडेटिव. बेटर टू एग्जिट द कॉल, दैट वुड बी मच बेटर. 1260 के ऊपर क्लोजिंग आती है, फिर ही फ्रेश मोमेंटम क्रिएट होएगा टुवर्ड्स 1300 प्लस लेवल्स. Adani Power. Adani Power and from the group, Adani Group as a whole has been quite volatile. If we see the charts of Adani Power on the weekly and the monthly scale, so let me pull out the weekly chart from last almost November 24. The stock is consolidating between 450 on the downside, whereas on the upside 565 is the hurdle zone. So right now it has again come back to its upper band. So ये broader range में ही trade कर रहा है. इमीडिएटली रेंज है 515 से लेके ऊपर 565 570 की. एंड जब तक इस रेंज को प्ले कर रहा है तब तक आपको ये रेंज को ही प्ले आउट करना पड़ेगा. कोई भी सेटअप मेजरली 570 ऊपर डिसाइसिव निकलता है, अभी कोई मेजर चेंज होएगा सेटअप में, तब तक एक रेंज बाउंड काउंटर रहेगा विद इन दिस रेंज. DMart, if we see, DMart has been, we have seen some mojo back in couple of series back, but post that again it has lost its shine because if we see the chart setup on the weekly and the monthly setup, weekly scale पे एक range में फंस गया है. ऊपर में 4300 की रेंज है, नीचे में 3800 का है.
So last, in fact, I checked the couple of days chart. थोड़ा सा हमने ऊपर से pull off देखा था. Daily scale पे, I'll just pull out the chart on the daily chart scale. Yeah. So if I see the chart setup on the daily scale पे हमने 7-8 दिन का corrective move देखा, वापस उसने support लिया around 3850 levels. So overall sideways, there is no major momentum. 3800 का support है, ऊपर में 4250 का hurdle zone है. So range bound movement है, कोई major momentum नहीं है. We would advise better to switch to other trending counters from the metal pack, selective pharma, selective auto. उसमें ज़्यादा momentum है. Better to play that strike. So view on NCC? NCC, let me look at the chart. And if you see, a good part is that at least the broader market is outperforming, because of which we are seeing very good traction in stocks. And though index has been consolidated, but at least broader market is outperforming. That definitely brings smile on majority of our faces, because our portfolio and our trading bets are majority in the broader market stocks. So coming back to NCC chart structure, वीकली स्केल पे ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्तों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है 222 223 के ऊपर. Slowly steadily the move can be seen towards 230 233 levels. Overall bias would be positive. Having said that, the bigger trend of the stock is still in pain. तो जो भी ये है, ये bounce back move है towards 232 234 तक का, तो इसको आप प्ले कर सकते हैं. नीचे में 221 का मेजर सपोर्ट है. And as we are discussing, sale is at days high, one of the BTC that we have already shared. So as looking at the opportunity wise, जो भी stocks में momentum है, guys, try to play it out. We are focusing more on the stocks today because there is no major momentum on the index wise. Just to summarize couple of things, coming back to Nifty. So Nifty overall the bias is positive. 24,445 is the major support level. Immediate basis 24,500 is the major support for tomorrow's expiry. But on the upside 24,750, 24,800 is the hurdle zone. 24,750 VWAP भी है, जो एक important hurdle zone की तरह काम करेगा. Talking about Bank Nifty, as we discussed, is trading in a channel from last almost 13 to 14 sessions. नीचे में 54,000 का support है, ऊपर में 55,250 का hurdle zone है. Selective banking stocks outperform करे, selective underperform करे, जिसके वजह से overall at Bank Nifty का जो movement है काफी dull है. And there are days when you see the index gets consolidated, but it's fine. We have to play that swing. CDI calls हमने already share किए. BTST we have already given and flashed on terminals. Overall, talking with that, we can take a couple of more stock queries, Anuj, and then we can close out the session. I guess so. We'll just take one last query. Your view on Paytm. Paytm and Mahindra. No problem. So Paytm, if we see overall the counter is in sideways, a very structured stock within that trading in a range between 800 to 900. So if we see the chart from 9th April till now, the stock is already in that band. नीचे में 800 का मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 900 का हर्डल है. So अगर ये रेंज को आपको प्ले करनी है तो आप ये प्ले कर सकते हैं. ओवरऑल बायस वुड बी पॉजिटिव, बट विद इन दैट रेंज. So 800 का मेजर सपोर्ट है, ऊपर में 900 का हर्डल है. M&M from the auto pack, one of the strongest counter within the auto space, where the auto index is still much down from its all high, but M&M is just couple of percentage far away from its all time high. So daily scale पे kind of a pole and flag pattern बना रहा है. Slowly steadily M&M the bias is still positive on the monthly and the weekly setup. धीरे-धीरे हमें 3200 तक का move दिख सकता है M&M में. So overall chart setup is one of the strongest counter. You can continue to hold the stock जब तक ये 3000 के ऊपर है. A bias will be positive towards 3200 3250 levels. So guys, that will be all for today's afternoon session. Tomorrow we have the Nifty expiry. Don't forget, we have pre-commodity crude oil expiry today, pre-crude oil expiry at 6 p.m. So don't forget to join in. Our expert, Mr. Ashish Katwa, will be taking it. That will be all. Thank you, everyone. Thank you, Arpit sir. Thank you.